बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स विद डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। आज हमारे साथ डॉक्टर मुबीन शाह साहब हैं। आप कश्मीरी रहनुमा हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स श्रीनगर के को आपने लीड भी किया, हेड भी किया, और इनसे जानते हैं कश्मीर की जो करंट मूवमेंट है उसके हवाले से जो अनंतनाग के अंदर होता रहा, इंडियन मीडिया बैशिंग करता रहा पाकिस्तान के हवाले से, रियलिटी क्या है और इस सिचुएशन को कश्मीरी किस तरह से देख रहे हैं, कश्मीरियों के अंदर क्या परसेप्शन है, इनका अपना विजन क्या कहता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, अरब वर्ल्ड कहाँ पे खड़ा है, दुनिया कहाँ पे खड़ी है, क्या इंडिया कश्मीरी मूवमेंट को दबा देगी, दबाने में कामयाब रहेगी, नहीं रहेगी, ये वो सवालात हैं आज के व्लॉग के अंदर हम कवर करेंगे। पहले तो मुबीन शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। Thank you, sir. Thank you for including me in this blog of yours. थैंक यू। डॉक्टर साहब, पहले तो मेहरबानी करके बताइएगा, अनंतनाग के अंदर ये 5 दिन से ज्यादा जो गन फाइट चलती रही और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के उसमें 3 ऑफिसर्स भी हलाक हुए, और कहा यह जा रहा था कि 2 से 3 फ्रीडम फाइटर्स हैं जो गन फाइट के अंदर इंगेज्ड हैं, और उन्होंने बड़े एक टिपिकल टेरेन के अंदर ले जाकर फोर्सेस को इंगेज किया हुआ था काफी अरसे तक। इस सारी डेवलपमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? सर, इसमें ऐसा है कि देर आर 2-3 एस्पेक्ट्स ऑफ इट। हम जो इधर बैठ के मतलब आउटसाइड कश्मीर और आउटसाइड इंडिया, वी कैन से दैट देर इज अ पॉसिबिलिटी कोई जो परसेप्शन हमारे को कश्मीरियों को है आउटसाइड जो बैठे हुए हैं, ये ये भी बोलते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि जी उन्होंने जी। अपने लोगों को मरवाया, whether it was in Pulwama, whether it was in Udi, हम्म, and they didn't care for their people, for their armed forces, and did a false flag operation. And even for that matter, जो ये पार्लियामेंट पे अटैक था, वो भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो हम्म। ये ये तो एक शाह परसेप्शन। साहब, ये तो उनके जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं, एक्स गोवा के जो गवर्नर थे, आपके कश्मीर के जो गवर्नर थे सत्यापाल मलिक साहब, वो तो बारहा ये कह रहे हैं कि ये करेंगे इलेक्शन के करीब। एग्जैक्टली, नंबर वन। नंबर टू ये भी है कि देखिए, क्योंकि इनकी हिस्ट्री में ये भी है कि कुछ पाकिस्तानी citizens who had been previously arrested long time back, हम्म। उनका रिकॉर्ड भी नहीं होगा अभी पाकिस्तान में, वो इनके जेलों में पड़े हुए हैं। हम्म। उनको निकाल निकाल कर ये सॉर्ट ऑफ थिंग दे कैन डू, दे कैन डू दिस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। वो पिछली दफा भी इसी एरिया में, मतलब नॉट इन दिस एरिया, राजौरी एरिया में उन्होंने किया था, आपको याद होगा। जी। एंड they had done of a person who had been arrested, who was supposed to hear, his hearing होनी थी, और उसको जी वो जी भाग गया, और वो सब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था टू किल हिम एंड ऑल दैट। तो ये तो इनकी हिस्ट्री है। दिस इज वन पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। अनदर पार्ट इज ये कि जो फ्रीडम फाइटर कश्मीर के हैं, दे हैव चेंज द स्ट्रेटजी, कीपिंग इन व्यू कि उनको व्हाट दे हैव फेस्ड इन द लास्ट 2-3 इयर्स, मतलब 2019 के बाद। तो शाह साहब, इसमें इससे पहले कि आप इस तरफ जाएं, मुझे काइंडली ये बताइएगा, क्या ये रिएक्शन भी हो सकता है जो कश्मीरी रहनुमाओं का टारगेट हुआ है पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर इंडियन इंटेलिजेंस एग्जैक्टली सर्विस। जी। ये मैं वही उसी पे आपको बताना चाहता था कि मतलब स्ट्रेटजी ये है कि दे आर नाउ टारगेटिंग द हम्म, एक्चुअल थिंग्स। ये नहीं था कि मतलब दे आर नाउ, जो भी अभी है फ्रीडम फाइटर, ही हैज गॉन थ्रू ऑल दीज थिंग्स, सो दे आर टारगेटिंग द एक्चुअल पीपल नाउ। द ऑफिसर्स जो टारगेट हुए हैं, इसका मतलब ही है कि देयर इज समथिंग सीरियसली हैपनिंग, एंड हम्म, नंबर टू, नंबर थ्री, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है कि जो ये फ्रीडम फाइटर्स कश्मीर के अब हैं, जो भी है, मतलब 100 हैं, 200 हैं, 300 हैं, 500 हैं, 1000 हैं। हम्म। एक्चुअली मेरे हिसाब से तो सारे कश्मीरी फ्रीडम फाइटर हैं। एक ने एग्जैक्टली। आर्म उठाया है, एक बिल्कुल ने ठीक आर्म है। उठाया है, दूसरे ने नहीं उठाया है। बिल्कुल ठीक फर्क तो इतना ही है। है। अब जो ये फ्रीडम फाइटर हैं, जो उनको पता है कि
what can affect India. ठीक है सर. तो ये इस लिहाज से it is a change of strategy of the Kashmiri freedom fighters. They are now going to target high potential targets. और यही होगा जिस ये दिखता है इस एक्शन से. क्योंकि पहले वो होते थे कि मतलब in the villages they would do, then they would उनको कॉर्नर किया जाता था because of intelligence and all that, और खुद ही ये डालते थे उन बंदूकों को उन घरों में, और फिर उनको they would get them assassinated. This is how they do things. मतलब हमारा if you see even in history, हमारा एक था डिविजनल कमिश्नर था वजाहत साहब, उन्होंने किताब एक लिखी. उसमें भी जब आप देखेंगे उसमें एक लीडर था हमारा फ्रॉम द सिविल सोसाइटी, डॉक्टर आहद गुरु. ही वाज उस किताब में उसने लिखा है कि हमने एक हिजबुल मुजाहिदीन के एक बिग लीडर को छोड़ दिया ना, मिलिटेंट लीडर को उसको छोड़ा with this condition that he has to kill this man. उसने उसको मारा और फिर वो बेदी साहब कुछ थे IGP और something, he killed this man. Very bad. They have this type of strategy also. ये है किताबों में है, and I have confronted Wajahat Sahab on this because he used to be a part of a civil society group which was used to talk with us. एंड उधर वहां हमारा एक कश्मीरी पंडित थे, तो मैंने उनको बोला यार आप लोगों ने तो ऐसे ऐसे असिस्टेशंस किए हैं, तो उसने बोला नहीं हो सकता है. मैंने बोला आप बजाज साहब से पूछे, ये डिविजनल कमिश्नर थे. उन्होंने बोला हाँ मैंने तो किताब में भी ये लिखा है. सो माय पॉइंट इज कि ये इन्होंने जो भी आज तक, ये हमको लगता है जो भी फ्रीडम फाइटर्स या जिनको इन्होंने जेलों से निकाला, उनको सोसाइटी में डाल दिया, किसी घर पे डाल दिया, उसी को फिर अटैक किया, उसी को फिर मरवाया, और फिर पब्लिसिटी की कि साहब हमने 2 आदमी को we have killed. This is the first time after a long time that repercussions have come to the Indian army and the Kashmiri police, who are, and this has been targeted like that. This is what I feel. You see, this is a change, a very drastic change, and this will change the future line of action of the people of Kashmir for freedom fighting. This is my feeling. This is my feeling. It is my inference and analysis of all what has happened up to now and what is going to happen. This is what it is. डॉक्टर साहब, इंडियंस का ख्याल ये है कि हम अगर पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज कर लें, चूंकि ये मैंने अपने कल के वीलॉग के अंदर भी जिक्र किया कि ये स्टीफन पी कोहन अपनी किताब आइडिया ऑफ पाकिस्तान और आइडिया ऑफ इंडिया के अंदर, आपने अगर देखा उनका टिल्ट इंडिया की तरफ ज्यादा नजर आता था. उन्होंने कहा जब तक पाकिस्तान की ताकत रोड़े अटकाती रहेगी इंडिया के सामने, तो वो कभी भी रीजनल पावर नहीं बनेगा. तो वेस्ट की भी अंडरस्टैंडिंग बज़ाहिर लगती है कि पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज किया जाए, और इंडियंस ये समझते हैं कि जब तक पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तो कश्मीर का मुद्दा जो है, इंडियन स्टांस जो है कश्मीर पर, वो कामयाब नहीं होगा. उसके लिए गालिबन अरब वर्ल्ड को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और साथ साथ वेस्ट की तरफ से भी प्रेशर आ रहा है. और ये जो इकोनॉमिक सारा क्राइसिस है, जिसे मैं कहता हूँ ये आर्टिफिशियल क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान की इकोनॉमी इसलिए नहीं डूबी है कि हमारी अनऑफिशियल इकोनॉमी बहुत ज्यादा बड़ी है बनिस्बत ऑफिशियल इकोनॉमी के. आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि अगर पाकिस्तान न्यूट्रलाइज हो भी जाए तो लगता है कि कश्मीर का मुद्दा सेटल डाउन होगा, या कश्मीरी उठ खड़े होंगे और फिर ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू बनेगा? सर ऐसा है कि आई डोंट नो who advises India or the world for that matter in this issue, in the sense, can you believe it, or can anybody, any Kashmiri think about leaving this moment, in the sense that they can be silent for a certain period of time? History यही है. आप, मैं आपको 1947 से आप देख लीजिए, for example, even when they had their own man Sheikh Abdullah there, 1953 ने उसमें समझ लीजिए एक हिसाब से रिवोल्ट किया. 53 के बाद up to 1990, it was off and on, छोटे से demonstrations, ऊपर से नीचे से वो ये, but not in a big way.
It happened in 1990 in a big way. और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो gap हुआ was also due to, unfortunately, because of the advice of the then Prime Minister of Pakistan, Mr. Bhutto. वो तो मतलब अपने आप को या भुट्टो पीपल जो भी हैं पीपल्स पार्टी वो बोलते हैं हमने भी कश्मीर के लिए हमने फाइट किया भुट्टो साहब ने ही वाज द पर्सन हु हैड एडवाइज्ड as per my understanding and as per my knowledge and as per my talks whenever I had talks with the political people whoever it is he had advised at that time Sheikh Abdullah's son when he had visited Pakistan कि जो भी कुछ लेना है इंडिया से ले लो हमारे पे आप ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना सो 75 का एग्रीमेंट शेख अब्दुल्ला ने ऑन दैट बेसिस किया कि मतलब अभी हमको इनके साथ ही रहना है और ये लेकिन उस शेख अब्दुल्ला को भी नहीं पता था कि कश्मीरी और उठेंगे एंड वो उठे जब 1990 में वो उठे ये खुद गए वहां ट्रेनिंग करने के लिए उस दूसरी साइड में दूसरे कश्मीर में ट्रेनिंग के लिए which was surprising even to the Pakistan government as such. They did not expect the number of people who would come like that. They did not. There was no instigation from the people from the Pakistan government, which I in 1990 I was in Kashmir, 1990, and I know it was grown in Kashmir itself. It was then given help by Pakistan in a way. I cannot say Pakistan, I will say Azad Kashmir. Azad Kashmir is same as Kashmir. Exactly. उन्होंने कहां से लाया हमको उसके साथ गर्ज नहीं है सवाल ये है it is in the DNA of Kashmir. They will fight the occupation of India even if it is the last man. अब इसमें चेंज हो सकती है क्योंकि अगर आप लॉरेंस की किताब पढ़ेंगे कश्मीर के मुतालिक बोलता है कश्मीरी इज अ पर्सन हु नोज हाउ टू सर्वाइव ही इज अ ग्रेट सर्वाइवर उसको पता है विद द सिचुएशन उसको कैसे सर्वाइव करना है दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही इज सर्वाइविंग टिल the situation becomes to his benefit or to his advantage and then he will again revolt. If the revolt will come, it will not because Pakistan will become, neutralized, as you say. It will not. It will create more problem for Pakistan itself also if it neutralizes itself. For example, the Azad Kashmir part will also then rise in the revolt. At this point of time, let us be very clear: the Azad Kashmir part is also supporting Pakistan because it is supporting the cause. Pakistan is supporting the cause. फिर तो दूसरी choice है देखिए मैं I am of the opinion that the people of Kashmir should be given the choice whether they want to join Pakistan, whether they want to be independent. That is the second part. The first part is that Pakistan, if it leaves support of Kashmir, they will themselves have the problem there in their side of Kashmir. The present Kashmir, which is with them, it will because Kashmiris itself do not want to be a part, and they will not compromise to this effect that the other side of Kashmir is with India. This is very, very clear. अब कितना साइड होगा मतलब जम्मू में कितना साइड होगा जो उसमें that is a question of discussion. But this is the basic thing. It is the DNA of a Kashmiri. हाँ टाइम लगेगा टाइम हो सकता है टाइम लगेगा टाइम will come again people will stand up for revolt. डॉक्टर This is साहब my feeling. This is my बिल्कुल perception. आपने सही कहा मेरी भी अंडरस्टैंडिंग यही है और कल मैंने वीलॉग में शेयर भी किया आपसे बात भी होती है आपसे सीखते भी हैं डॉक्टर साहब ये काइंडली बताइएगा कि इस वक्त जो मुस्लिम वर्ल्ड है उससे क्या कश्मीरियों की एक्सपेक्टेशंस हैं ये जो अभी G20 की समिट हुई सरबराहों की और उसमें जो नक्शा पीछे दिखाया गया इंडिया का उसके अंदर तो गिलगित बल्तिस्तान वो इंडिया का हिस्सा दिखाया गया और फिर यूएई के बारे में भी इस तरह की बातें आ रही हैं आपकी भी इंफॉर्मेशन में होंगी कि उन्होंने मोरलेस रिकॉग्नाइज किया है और गालिबन एक तो हमारे जो पाकिस्तान के अंदर जर्नलिस्ट हैं हारून रशीद साहब हों या डॉक्टर मुईद हों उनका तो कहना ये है कि मशरूत किया है यूएई ने और सऊदी अरब ने कि हम आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे उस सूरत में कि आप इंडिया का जो स्टांस है कश्मीर पर उसको तस्लीम कर लें इजराइल को आप तस्लीम कर लें आप किस तरह से देखते हैं आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस पे देखिए सर ऐसा है अरब वर्ल्ड जो है जो आप बोल रहे हैं सऊदी अरेबिया है यूएई है उनका बेसिक
अब आप देखिए उनके अपनी इलाके में पैलेस्टीन का प्रॉब्लम है. If they would have been sincere to that cause, फलस्तीन तो आज तक तो प्रॉब्लम नहीं, हम तो सेटल हो गया होगा ना कहीं सेटल हो गया होता. अच्छा, इजिप्ट देखिए हमारे को क्या पोजिशन, हमारा मेरा परसेप्शन क्या है, मेरा परसेप्शन है इजिप्ट एंड पाकिस्तान. इजिप्ट इज सेम टू पैलेस्टाइन व्हाट पाकिस्तान इज टू कश्मीर. ठीक है सर. इजिप्ट हैज बीन cannot do decisions on its own. It is on the behest of Saudi Arabia and UAE. You see, if you remember when that jo Morsi tha, he had tried to help Palestinians. One of the reasons of his ouster was that also. Let us be very frank about it. This was also one of the. But usko, was it because of American pressure? Was it about something else? That is something. History will only tell at a certain point of time why it happened and why not happened. तो इजिप्ट जो है, Egypt, if it would have been sincere with Palestine, do you think the Palestinian problem would have been still there? No, because Egypt was a bigger power than Israel. Right, they lost a war against Israel, but the second war they won, and they could have made a difference to the Palestinian people. And personally, I don't think that the people of Pakistan will allow the Pakistan government, whoever it is, to compromise on Kashmir. This is my feeling. It was not like Egyptian people that they will not, sort of forget about it. You see, whatever it is. So, ये एक important चीज है. Number one. Number two is जो UAE है, जब उनको पूछा गया कि why you are putting the relationship with Israel again, they said हमने इतना झगड़ा किया वो क्या, तो कुछ हासिल तो हुआ नहीं. It is better to invest and make a difference. Yes, that is also a way of getting things done. That you invest and all these things in India and all that. For example, India is also from the rooftops announcing that they are investing. The UAE भी invest कर रहा है, वो भी कर रहा है. But yes, I feel personally it may be beneficial for Indian Muslims. Because what is happening to the Muslims in India. तो उनका वो थोड़ा बहुत कर सकते हैं to support them so that they do not go to the whole extent of genocide. It will be at the cost of Kashmir. There is no doubt about it. That is why wherever I go, whenever I have the opportunity, जो भी OIC countries हैं, they have not been able to implement even their own resolutions on Kashmir. This is where the Pakistan government foreign office would have failed us. Failed us in the sense that जो वो commitments करते थे वो implement नहीं हुए. And implement नहीं हुए. अगर कोई आप देखिए ना, अमेरिका जब कुछ चीज implement करवाना चाहता है तो नहीं करता कोई, तो उसको बोलते हैं जी तुम्हारे साथ ट्रेड बंद कर देंगे. by portion किसी वक्त तो कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन पोर्शन बाय पोर्शन ये अरब कंट्रीज ने नहीं किया. दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट. Kashmiris expect that the Arab countries should do not completely close everything, but do it in portions so that India does sincere negotiation and settles the Kashmir issue on the basis of what the people of Kashmir want. We are not asking we want Pakistan or we want independence. What the Kashmiri people, it is a UN resolution, nothing else. We are not asking something which is not there. It is there already. But the question is how to go about it. This is what we want the Arab countries and particularly strong countries like Saudi Arabia and UAE to do about it. Yes, there is reverse investment. India, particularly Indians, you can see they are the maximum investors in UAE. So, particularly in Dubai. So, उस लिहाज से UAE may not be in a position to do like that, but Saudi Arabia can, because Saudi Arabia does not, they don't want Indian investment as such. So they have. देखिए आप, जब इमरान खान ने
he wanted to go to, to Malaysia for a meeting. So what did MBS say? MBS said, "तो मैं आपके साथ labor वापस भेज देता हूँ." So he had abandoned. India is also India also gets a lot of foreign exchange through the people who are working in the Middle East, and you can see, they have that leverage also, that they can do it, and added on that will be now the investments which they are telling from rooftops that this is this, अब हम ये वो नया route बना रहे हैं, वो बना रहे हैं. So India has to listen to somewhere, and somewhere that is going to be the issue. तो ये है सर. ये तो खैर बड़ा डाउटफुल है कि इंडिया का वो जो कनेक्टिविटी का जो रूट है वो भी कामयाब होता है नहीं होता. ये तो आज तक मैप्स इंडिया हमेशा इस तरह के फिलर्स छोड़ता है और फिर देखता है कि दुनिया किस तरह से रिएक्ट करती है, किस तरह से फील करती है. उनके बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम्स आए. सीपैक के सिवा तो आज तक हमें कोई प्रैक्टिकली जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा हुआ वो नजर नहीं आता. होना क्या चाहिए डॉक्टर साहब? पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? आप क्या समझते हैं इस ऊंट को किस करवट बिठाया जाए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू डेवलपिंग वर्ल्ड, जहां पे डिफरेंट सेंटर्स ऑफ पावर्स जो हैं इमर्ज कर रहे हैं, जहां पे अमेरिकन चाइनीज इन्फ्लुएंस को रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं. तो इस सारी चीजों में इसलिए तो इंडिया में हवा भरी जा रही है. हालांकि इंडिया के लिए तो फरीद जकरिया का मैंने कई दफा कोट किया है, इंडियन चैनल को इंटरव्यू देते हुए उसने कहा कि आप 35 सालों तक भी चाइना के करीब नहीं फटक सकते. चाइना की $18.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 3.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और फिर रिलाय कर रहे हैं अमेरिका पे जो डिक्लाइनिंग पावर है. और मैं ये कहीं फिगर देख रहा था, ब्लूम्सबर्ग की बल्कि फिगर है कि 2022 के अंदर अमेरिका ने तकरीबन $33 ट्रिलियन का मकरूज है. उसकी जीडीपी है तकरीबन $24 ट्रिलियन की. वो कहते हैं 120% ऑफ इट्स जीडीपी तो वो मकरूज है. तो अब सिचुएशन तो बड़ी वाज़ेह है अगर आप फिगर्स को देखें. तो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन को कैसे डील करे? एक तरफ प्रेशर है अरब वर्ल्ड का, फिर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन और आईएमएफ का प्रेशर. आज तो वो एक डॉक्यूमेंट भी आ गया है कि जी वो तो आईएमएफ की जो डील हुई थी वो तो इस वजह से हुई थी कि हमने वेपन वहां पे यूक्रेन के अंदर दिए. तो ये प्रेशर्स हैं और ये जानबूझ के ये लीक करवाए जाती हैं चीजें. तो आप कैसे देखते हैं सारी सिचुएशन? सर, बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, में आपका पिछले क्वेश्चन का मैंने पूरा आंसर नहीं दिया रिगार्डिंग द मैप विच वाज शोन इन द G20. जी जी. तो उसमें मतलब मेरे को किसी ने वो भेजा भी था, एंड आई हैड सेंड अ रिप्लाई आल्सो, एंड मैंने उसको बोला था, देखिए जो ये है मैप्स, यस दे आर टॉकिंग पॉइंट्स, these maps are talking points, but until unless you do not implement what you see on the map, then it is something different. जैसे पाकिस्तान ने, for example, they made maps, and I am on record to say when I was in Pakistan, when I met whoever I could meet in Pakistan, and even in universities and all that, I spoke that आपके मैप में तो हम पार्ट ऑफ पाकिस्तान हैं. तो लेकिन जब हिंदुस्तान ने हमारे पे एक हिसाब से अटैक ही किया, तो आपने तो नहीं किया इफ यू वुड हैव अटैक्ड ऑन लाहौर, समथिंग लाइक दैट. सो रेड लाइंस नहीं है. इंडिया जो है, इंडिया वो प्रोजेक्शन कर रहा है, लेकिन ये मैप से वो दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, दैट इज इमेटीरियल फॉर अस. इट इज द क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन ऑन द ग्राउंड. On the ground, Kashmiris will never compromise. This is my belief, and this is my thing, that it has never done it. Our generations, my father's generation was like that. I am with this generation. My children will be also like that. But third generation will be also like that. I am talking about after 1947. So ये एक एस्पेक्ट है. दूसरा जो ये आप कह रहे हैं, देखिए अमेरिका unfortunate, because it is a country which helped me to get out of the Indian prison. But keeping in view of whatever it is, America unfortunately has gone into such a situation where it could have been better for them to join up. Let us say CPEC is there,
Well, I remember when I was the president of the chamber in 2008, and when there was a movement for opening the LOC, and at that time, CNN took an interview from me. तो उन्होंने बोला कि what do you visualize? मैंने बोला may I visualize connections to the whole world and Kashmir being a pivot to it in a way. You know, this is my vision or my feeling that this can come. And because of that also, then in 2012 to 2014, when I became the president of the joint chamber, I had suggested कि साहब कश्मीर जो इंडिया के साथ है उसको भी फ्री इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर करो, पाकिस्तान का साइड जो है उसको भी, एंड वी विल गेट द कनेक्शन विद सीपीसी. एंड I recall a meeting between the American embassy personnel who had come to Kashmir during that period between 2012 to 2014. And when I met, and there was this commercial attaché, I don't remember the name of the gentleman, he got up from his chair, which was undiplomatic, and told me we will never allow the CPEC to prosper or be operational. CPEC तो operational हुआ, लेकिन अब पाकिस्तान को how to play its cards is very important. That they have to convince the world, convince America, convince China, convince, जैसे आपने कल blog में बोला, which is very, very good. I liked it very much. That they have to convince them that it is beneficial for everybody. This CPC route and this thing. And through it, I can feel and visualize that there can be settlement of Kashmir also. अगर हमारा वो model उन्होंने agree किया, that sort of thing. So my point is, world needs to be connected to each other. मैं तो बोलता हूं, अगर ये बोलते हैं साहब ये स्पाइस रूट है, वो रूट है, ये रूट है, मोर द मेरियर. बट इफ इन बिटवीन झगड़ा होगा तो कुछ नहीं चलेगा ना वो चलेगा ना ये चलेगा. अभी देखिए ना, इंडिया ने कितनी बार वो बोला कि छाबर वो क्या नाम है पोर्ट थ्रू ईरान करेंगे, वो करेंगे, हुआ ऑपरेशनल? नथिंग. इट विल नेवर ऑपरेट. एंड इंडिया को फॉर देयर बेनिफिट, फॉर द होल इंडिया, it is benefit for them to do the CPC, to join the CPC, to go to Central Asia and create and settle the issue of Kashmir. They will also become economically strong. Pakistan will also become economically strong, and the world will be a better place to live. This is my feeling. मतलब ये है हमारे को. This is मतलब I can speak like that because I am basically a businessman. But at the same time, I've gone through all these things and I can visualize what can happen, what cannot happen. And on one side, you have the Kashmiri people who will not compromise. On the other side, you have a nuclear country like Pakistan. Whatever its problems are, I am sure it will surmount them. There is no reason it should not. But if they play the cards properly and convince the world that this is the way to do it, I think there should not be a problem. They were able to convince at that time to to have a relationship between America and Chow and Lai and all that. Why not now? It is not difficult. But the question is, yes, there is a lot of doubts here and there and everything. But when I see sometimes I may go off track in this connection, but when I see Pakistan is demonstrating in America, and I feel that that is also an opportunity of changing the American thinking about Pakistan. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने अपना वक्त दिया और अच्छी एनालिसिस दी, और मेरी भी अंडरस्टैंडिंग मोर और लेस यही है जो आपने फरमाया. और मेरा ख्याल ये वक्त है पाकिस्तान के पास. मैं तो ये कहता हूँ कि जब हम ये दावा करते हैं कि वी हैव टू हैव अ बैलेंस पॉलिसी बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, बट दिस इज द टेस्टिंग टाइम वेयर वी नीड टू प्रूव आवरसेल्फ कि वी कैन बैलेंस द रिलेशनशिप. बहरहाल नाजरीन के कमेंट्स का इंतजार रहेगा. आपने सुनी डॉक्टर साहब की बातें. आप अपने कमेंट से हमें बताइएगा कि आप किस हद तक इसके साथ एग्री करते हैं.
अगले व्लॉग में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।